Do subscribe to Ekeeda channel and press bell icon to get updates about latest engineering, HSC and IIT JEE main and advanced videos. Question 5 sin square bracket pi by 4 minus x bracket complete plus sin square bracket pi by 4 plus x bracket complete is equal to 1. यह हमें प्रूफ करना है. अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. First we observe here pi by 4 plus x plus pi by 4 minus x is equal to pi by 2. Therefore, pi by 4 plus x is equal to pi by 2 minus bracket pi by 4 minus x. अब हमारा क्वेश्चन है साइन में, so we operate sine function on both sides, so we get sine of pi by 4 plus x is equal to sine bracket pi by 2 minus another bracket pi by 4 minus x bracket complete. Therefore, the next step will be sine of pi by 4 plus x is equal to sine of, राइट में ऑब्जर्व किया तो ब्रैकेट में आ रहा है साइन 90 प्लस थीटा कि जिसका आंसर आता है cos थीटा. Therefore, sine of pi by 2 minus bracket pi by 4 minus x is equal to cos bracket pi by 4 minus x. Let us denote this as a equation 1. अब हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से. सो लेफ्ट हैंड साइड से हमारी साइन स्क्वायर ब्रैकेट पाई बाय 4 प्लस एक्स ब्रैकेट कंप्लीट प्लस साइन स्क्वायर ब्रैकेट पाई बाय 4 माइनस एक्स ब्रैकेट कंप्लीट is equal to, now from equation 1 sin of pi by 4 plus x is equal to cos pi by 4 minus x. उसे हम रिप्लेस करते हैं फॉर साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स की जगह पर, तो हमें मिलेगा cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स. देन प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स वी राइट एज इट इज. उसके बाद बाय अप्लाइंग simple trigonometric identities that cos square theta plus sin square theta equal to 1. Therefore, cos square pi by 4 minus x plus sin square pi by 4 minus x is equal to 1. And that is equal to right hand side.